A very happy new year to all of you. Although I wish I could have said that with more gusto, I am tentative because I don't know whether the new year will indeed be happy as we all want it to be. The year-end speech by Prime Minister Narendra Modi was awaited by the people of India with great expectations. There was an element of fear, greed, and hope all at the same time. There was fear that PM would unleash second surgical strike and announce further harsh measures in his fight against corruption. There was an element of greed that PM might distribute black money which was unearthed as a result of Notbandi and deposit it into the Jan Dhan accounts of poor people, as he had promised before elections for foreign money. And thirdly, there was hope that finally the hardship would be over. No one would have to stand in long lines anymore to withdraw their own hard-earned cash. No limits on withdrawals, either from banks or ATMs. And after all, in one of his speeches, PM had begged for just 50 days for normalcy to return. He had become emotional and said, "Just give me 50 days. If normalcy does not come, take me to the nearest street corner," and he paused and said that, "Give me any punishment you deem fit." Unfortunately, nothing of the sort happened. Students of economics and politics and everyone else was waiting for hard data on how much black money was extinguished, whether sufficient quantity of new 500 rupee notes were issued, and whether there would be compensation for people who died and for those who suffered grievously. In short, people expected PM to declare that the exercise was successful and that people had suffered for a good cause. But PM gave no hard data. Instead, he delivered what can at best be called a mini-budget speech to declare some poll stops before the Model Code of Conduct kicks in, almost sounding apologetic. His speechwriters betrayed poor understanding of basic concepts and made fantastic assumptions and assertions. He said all 500 and 1000 rupee notes were used for parallel economy. That too only since the UPA government came to power. He said over last 10 to 12 years. It is an insult to the daily wage earners, farmers, small traders, and nearly 70% of the population of the country who do not have access to banking services and who are not financially literate. He said excess cash was causing inflation and black marketing. He wanted to achieve balance by reducing cash. So how much is the right amount of cash? He said cash outside the formal economy, that is cash which is not in banks, was bad. So was the Prime Minister advocating a zero cash economy? PM could not digest that only 24 lakh persons declared income of over 10 lakh rupee every year. All he had to do was make a phone call to the Revenue Secretary, and he could have obtained full breakup of the number of taxpayers.
The real question is, what was the income tax department doing? What did they do about the 500 crore Reddy wedding in Bangalore? PM took credit that so much cash was deposited in the banks. What choice did the people have? They had to go to banks as no one else would exchange their hard earned currency. And because of the faulty design of the exercise and lack of adequate preparation or consultation, the entire cash available with the public, both black and legal, came back to the banks. In fact, the entire black currency available in the economy has been converted to legitimate money. Exact opposite of what PM had wanted. PM said some officers had committed grave crimes. It was obvious. With so much new currency available outside, someone was colluding. He could have sounded more credible if he had given details of how many people were arrested and how many were dismissed from service. PM had announced some entrance subvention schemes. He appealed to the banks to concentrate on the poor and middle classes. Surely, he knows that banks do not work on appeals from anyone, but strictly under the Banking Regulation Act and the RBI Act. The RBI will have to issue orders and government will have to compensate banks for any interest subsidies, not based on PM's appeal. Manufacturing sector has come to a grinding halt with laying off of thousands of workers. In the month of December, service sector PMI has plunged to a 3-year low of 46.7. Additional working capital promised by Prime Minister is not practical as banks have strict financing norms. Obviously, PM has not consulted RBI. On the housing front, dismal performance of the Pradhan Mantri Awas Yojana in its first year speaks for the lackadaisical approach by the government. In the first year of PMAY, only 1,623 houses have been constructed against the aim of constructing 30 lakh houses per year. Interest subvention component was already available under the Credit Linked Subsidies Subcomponent, CLSS, which offers 6.5% interest subsidy for economically weaker sections and LIG families. Talking of agriculture, PM did not say anything about the fall in prices of farm produce and the loss of wages of land-based labor. Agriculture has been hardest hit as timing of this monumental disaster coincided with harvest of kharif crops and sowing of rabi crop. Sales in the informal sector have been reduced by 30 to 40%. He did not talk about loss of income of cooperative banks due to closure and when would they be allowed to resume full operations. He agreed to bear the interest for 2 months when farmers could not access their own funds. This was one of the demands made by Shri Rahul Gandhi, but other demands have not been even considered. Converting Kisan credit cards to RuPay cards cannot be a substitute for cash, as it is well known that 90% of rural poor use credit cards only to withdraw cash because poor infrastructure and poor financial literacy. Government's claim of increased acreage of sowing compared to last year is a hollow claim when we consider drought conditions in the previous year. In December 2015,
207 districts in 9 states were reeling under severe drought. And therefore, a normal year shows a much higher sowing. PM has announced some schemes for pregnant women. The scheme for financial assistance to them was actually started as a pilot project in November 2010 under the UPA government. It became the part of the National Food Security Act 2013, which was accented to by President on 13 September 2013. The financial assistance under this scheme was increased from rupees 4,000 to rupees 6,000 in 2013 itself. It's not a new scheme at all. On the whole, Prime Minister's speech yesterday was full of jingoistic appeal wrapped up in nationalistic fervor, comparing demonetization with external aggression against the country. Prime Minister failed to acknowledge the intrinsic strength and the collective energy of the Indian people displayed during national calamities, terrorist attacks. The 50 days of so-called Shuddhi Yagna is nothing short of uncontrolled forest fire, which has taken toll of over 118 lives across the country and has crippled 40% of the informal economy. Lakhs of job losses are feared, ranging from sectors like textiles, leather, agriculture, tea, jute, plantation, construction. PM had no word of consolation for them, nor did he offer any solace. This will be one of the most depressing start of a new year in recent memory. Thank you. देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार कोई भी जानकारी नहीं दे रही है, बल्कि पूरी देश की जनता ही नहीं, दुनिया के लोग इस एक्सरसाइज की तरफ देख रहे थे कि अगर ये सफल हुआ तो और भी देश, विशेषकर जो विकसनशील देश है, वो शायद इसको अपना दे. लेकिन एक तो ये तो हम मानते हैं कि ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो पूरा असफल हुआ है. विशेषकर जैसे मैंने कहा कि सारा का सारा जो काला धन लोगों के पास था, उन्होंने सब उसको कन्वर्ट करके सफ़ेद बना लिया है, सारा का सारा. इसीलिए सरकार कोई आंकड़े नहीं दे रही. पिछले हफ्ते ही हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब थे, हसमुख आदिया जी, उन्होंने कह दिया था कि सभी पैसे वापस आएंगे. ये जो डिज़ाइन किया था स्कीम का इतना गलत था कि जिसके पास भी कोई पैसा पड़ा था उसने या तो 2.5 लाख के अकाउंट, बेनामी अकाउंट खोल के वो जमा कर दिया. कई लोगों ने सोना खरीदा और जो सुनार थे उनके थ्रू बैंकों में पैसा गया. और जैसे मैंने कहा कि बंडल के बंडल नए नोट बाहर मिल रहे थे. जब 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहकर लोगों को एक नोट मिल रहा था 2000 का, उसी वक्त लाखों के नए 2000 के नोट बाजार में छापा मार के पकड़े गए. तो यानी कितने नहीं पकड़े गए और कितने बदले गए उसका कोई हिसाब नहीं है. प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में स्वीकार किया है कि कई लोगों ने गलत काम किया है, लेकिन क्या किस पे कोई एक्शन हुआ है? और जो से अपने मूल प्रश्न पूछा था कि आरबीआई ने कोई आरटीआई में जवाब नहीं दिया, कैसे देंगे जवाब? अगर जवाब देंगे तो उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सारा का सारा जो एक्सरसाइज था, सारा डिमोनेटाइजेशन का जो किया था पिछले 50 दिनों से चल रहा था. और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि 50 दिन के बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या तो ठीक हुआ है? कितना तो पैसा जमा हुआ है? कितने 500 रुपये के नोट लोगों के पास पहुंचे हैं? और पूरी सारे के सारे नोट बदलने में कितना समय लगेगा? क्या सरकार सारे नोट बदलेगी भी
जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि कैश का होना ही गलत है। कहते हैं कि अगर कैश है तो वो सारी पैरेलल इकोनॉमी है, जिसका मैंने जिक्र किया था। तो मैं नहीं समझता कि सरकार कोई आंकड़े देगी, ना आरबीआई देगी, ना सरकार देगी, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी, और ये सब भाषणबाजी करके लोगों को गुमराह करने की अब कोशिश अगले दिनों में होंगी। और इसलिए देशभक्ति का नारा दिया जा रहा है, वो अभी भी और भी कुछ करके और लंबे लंबे नारे देंगे, लेकिन 50 दिन लोगों ने जो तकलीफ झेली है, जो जाने गई है, जो किसानों का नुकसान हुआ है, वो शायद रोजगार जो गए हैं वो वापस शायद नहीं आएंगे अब। और सरकार कोई आंकड़े, कोई तथ्य, कोई इसके लिए कोई नहीं देने को तैयार। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं पूरे प्रोजेक्ट। एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को कहा था कि 50 दिन के बाद स्थिति सुधर जाएगी, पैसा मिलने लगेगा, लेकिन 4500 रुपये भी कई बैंकों में एटीएम में नहीं मिल रहा है आज की जो स्थिति है। तो 50 दिन के बाद स्थिति 10 की 10 दिखाई दे रही है, कोई सुधार नहीं है। इसके लिए देखिए, इसीलिए हम तो आंदोलन तो हमने घोषित किया ही है, हम आंदोलन तो करेंगे, लेकिन हमारी उम्मीद थी कि जैसे चिदम्बरम साहब ने कहा था और इंदिरा जी का वास्ता दिया था, प्रधानमंत्री देश के जनता से माफ़ी मांगेंगे। उनका उद्देश्य अच्छा था, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि पूरा देश उनके साथ था, पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनका स्वागत किया था कि अगर सचमुच अगर आप आतंकवाद के खिलाफ, अगर सचमुच अगर आप काला पैसा नष्ट करने पे तुले हुए हैं, भ्रष्टाचार समाप्त करने में तुले हुए, तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। लेकिन आज ये साफ हुआ है कि इसमें से एक भी उद्देश्य सफल नहीं हुआ है, बल्कि काला पैसा नष्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता, सारा का सारा काला पैसा सफेद हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल उसे कहते हैं जी, बिल्कुल जी, क्योंकि विशेषकर आज जो कुछ भी तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं, और जैसे कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी कह चुके हैं कि सारा पैसा वापस आ जाएगा, और लगता है कि आ गया है, तो ये क्या सारा काला पैसा सफेद नहीं हुआ? देखिए, राहुल जी जो लाइन में लगे थे, उसका सिर्फ उद्देश्य था कि प्रातिनिधिक तौर पे जो लोग बहुत मुश्किल सह रहे हैं उनके साथ एक रूप होना, उनके साथ संवेदना प्रकट करना था। कोई ये बात नहीं थी कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं गए थे वो। अब जो लोग तकलीफ सहन करने थे तो हम उनके साथ हैं, ये बताने के लिए राहुल जी गए थे। तो अब वेंकैया नायडू जी को जो कहना है कहें, अवश्य हम तो जनता के साथ हैं और जनता के साथ रहेंगे। No, I have no idea about his travel programs. सर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। कभी इस्तीफा अखिलेश यादव का वापस होता है, और आज तो पॉलिटिकल ड्रामा इस हाई वोल्टेज पे था कि मुलायम सिंह को ही संरक्षक बना दिया गया अधिवेशन बुलाकर, और शिवपाल यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया, कहाँ अपने आपको देखा? देखिए, कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी की है कि ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जहाँ तक कि समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम एक समविचारी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी भी जो सांप्रदायिक ताकतें उनसे लड़ रही है, और हम भी लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जल्दी से उनका अंदरूनी जो संकट पैदा हुआ है वो हल हो जाएगा। हम उस पर और ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका निजी मामला है, पार्टी का निजी मामला है। ओके, थैंक यू।